वेलकम टू ओडिशा ऑल टेक यूट्यूब चैनल। जदि आप आम चैनल को प्रथम आछंती दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। देखो आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाए जो कि हाइकोर्ट माननीय हाइकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय पेंशन को नहीं गोटे खुशी खबर कहीपर। तो आप जानते प्रति आम देशर प्रति हाइकोर्ट हूँ सुप्रीमकोर्ट समस्ते गोटे सूत्र बंधा एवं गोटे कोर्टर केस को आमर जो केसटा होता है ताकू रेफरेन्स करी अन्य गोटे कोर्ट रे मध्य केस को रेफरेन्स हिसाब से नि जाए। तो यहाँ जोटा आईन व्यवस्था अनुसार तो ये हाइकोर्ट को कौन गुरुत्वपूर्ण राय रही पेंशन को नहीं आम से विषय में आलोचना करवा। दयाकोरी वीडियो को शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा आप संपूर्ण खबर विषय में जानीपर। तो चलतु आरंभ करिया खबरटी। देखो डिपेंडेंट कैन नॉट बी डिनाइड जो डिपेंडेंट फैमिली पेंशन जो मैंने पाँच से डिनाइड करा जाय परिबनी मेयरली बिकॉज ऑफ एम्प्लॉइज अपॉइंटमेंट लेटर जो रही सेट प्योरली टेम्पोरारी बेसिस। ये राजस्थान हाइकोर्ट तांको गुरुत्वपूर्ण राय रे कहते। ये आम देखा केस राजस्थान हाइकोर्ट हैज ग्रांटेड रिलीफ इन ए पिटिशन सीकिंग फैमिली पेंशन को नहीं जोटी की अदर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेचुटी इत्यादि को नहीं फाइल्ड आफ्टर 24 ईयर ऑफ द डेथ ऑफ द पिटिशनर हस्बैंड opining that the question of limitation or delay could not be raised by the state to deny legitimate benefit to a government servant or his dependent. एटी कहुई फर्दर द बेंच ऑफ जस्टिस आनंद शर्मा हेल्ड दैट जे माननीय जस्टिस थे आनंद शर्मा से कहते इन केस ऑफ द प्रोसीड्योर adopted to appoint the concerned government servant was similar to that of a substitute employee जो अच्छी temporary employee benefit could not be denied to him or family on the ground of that the appointment letter mentioned purely on temporary basis. तो ये जब कहुई सरकारी कर्मचारी भली जो प्रोसीड्योर रही निजुक्ति देवाई जड़े टेम्पोरारी एम्प्लॉई जदि से प्रोसीड्योर फॉलो कराऊँच तो पेंशन कि फैमिली पेंशन देवाई सरकार मना करें नहीं। द पिटिशन वाज फाइल्ड बाय द वाइफ ऑफ ए लेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु वाज अपॉइंटेड ए लोअर डिवीजन क्लर्क जे कि 1989 फॉलोइंग ए रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस इवन दो हिज अपॉइंटमेंट लेटर मेंशन प्योरली ऑन द टेम्पोरारी बेसिस ही डाइड आफ्टर रेंडरिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस जोटे कि 1990 से मृत्युवरण करते। Based on the phrase being used in appointment letter, no benefit were extended to his family. Hence, the petition was filed in 2014. It was the case of petitioner that her husband's death, she was granted compensation appointment, which also revealed that the husband was being treated as substantive appointment. तो ये देखा जी सहित कोर्ट कहते on the contrary, the state argued that the petition being filed आफ्टर सो मच डिले तो बहुत लेट रे केस फाइल कराई सफर फ्रॉम द वॉइस ऑफ द डिले एंड लैचेस थस कुड नॉट बी एंटरटेन फर्दर इट वाज आर्ग्यूड दैट सिंस द हस्बैंड वाज अपॉइंटेड ऑन प्योरली टेम्पोरारी बेसिस as reflected on his appointment letter family pension could not be granted जेहेतु टेम्पोरारी अपॉइंटमेंट थिला तेणुकरी फैमिली पेंशन ग्रांटेड करा जाय परिबने। आफ्टर हियरिंग द कंटेंशन द कोर्ट रिजेक्टेड बोथ द आर्गुमेंट put forth by the state, held that process adopted for his appointment was similar to the process appointment of substantive by temporary employee. सेठी कहुई कि रेगुलर कर्मचारी पर जो प्रोसेस अप्लाई करा जाए फॉलो करा जाए नियुक्ति पाई आंको पाई मध्य सही प्रोसेस फॉलो कराई। देयरफॉर बेनिफिट जो रही व्हिच आर अदरवाइज एडमिसिबल टू द सब्सटेंटिव एम्प्लॉई कैन नॉट बी डिनाइड टू द डिपेंडेंट ऑफ द डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली फॉर द रीजन that the term purely on temporary basis has been used in the appointment letter. एटी मध्य कहुई the court further made a reference to rule जो रही rule 268A of the then prevailing Rajasthan service rule 1951 that provided that the dependent of the government employee were entitled to family pension irrespective of the employee being appointed on a temporary or permanent basis. ता सहित ये माननीय कोर्ट इन रिलेशन टू द आर्गुमेंट ऑफ द पिटिशनर बीइंग फाइल्ड बाय बैलेटेडली द कोर्ट ओपाइंड दैट इट वाज सेटल्ड दैट द पेंशन वाज नॉट ए बाउंटी बट ए राइट व्हिच कुड नॉट बी डिनाइड बाय द स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन और डिले। तो ता सहित इन दिस बैकग्राउंड द पिटिशनर वाज अलाउड एंड द टेस्ट
State was directed to release all the benefit of the petitioner along with interest at the rate of 9% since the delay in release of family pension was solely on account of the unjustified reason of the state. এটি গুরুত্বপূর্ণ মান্যবর কোর্ট গোটে গুরুত্বপূর্ণ রায় ଦେଇଥିଲେ পেনশনକୁ ନେଇ। ତ ଆଜିର ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।